तो हम सोचते थे कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे गडकरी साहब रोज बनाते हैं। इतने चैलेंजेस हैं कि सोच भी नहीं सकते, पूरे दिन निकल सकता। ट्रम्प साहब की चैलेंजेस हैं। 500% टैरिफ हमारे पर लगा देंगे। इंडिया इज अ पुअर कंट्री। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत। एआई हो न हो, रोटी कपड़ा मकान तो होना ही रहेगा है। ही रहेगा। ऐसे ही नहीं होंगे तो रियल एस्टेट कैसे खरीदा जाएगा? Real estate is definitely going to grow. Instead of solving the challenge, we have created a challenge. Out of that 50,000, 26,000 is going to the government directly or indirectly. जो क्रांति हम और सेक्टर्स में हम करना चाहते हैं, वो क्रांति हमें हाउसिंग में करने की जरूरत है। एयर क्वालिटी खराब है। Why we compromise on quality also? करप्शन एंड बैड क्वालिटी। ऐसे में ज्यादा पैसे बनाओ और वही कॉन्ट्रैक्टर दुबई जाके नॉट वन पॉट होल इन द होल सिटी सूली पर चढ़ाना है। आपके मुंबई तक भी चैनल्स में सिर्फ यही न्यूज़ आती होगी that we have big potholes, water logging problem is there, कार डूब गई, कुछ और हो गया, and yes it is a mess. और हम महात्मा गांधी नहीं है कि हर एक को हम सुधारने के लिए कोशिश भी करें। गुड़गांव my favorite. Solve infrastructure problem. Right. So I heard a secret that you are searching for a good land in Gurgaon. Can any city replace Mumbai as richest city in future? If yes, which? In today's podcast, we have highly esteemed guest who laid foundation of the most trusted real estate company of India in 1979, the Hiranandani Group. Well known to redefine the skyline of Mumbai with no compromise on quality, being part of many big reforms, country's foremost billionaire, the most recognized face of Indian real estate, Dr. Niranjan Hiranandani. So it's a privilege to have you, sir. I've seen all of your podcast. So I thought last night इस बारी कुछ अलग कंटेंट बनाएंगे. I really want आप भी जितनी चैलेंजेस मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आप भी खुल के बताइएगा, अपने दिल की बात शेयर कीजिएगा. And we all want solutions also. So शुरू करते हैं सर. It's been almost 15 years of journey. I'm working in real estate. So in 15 years, we have seen that Indian real estate has evolved. आज अगर हम overall Indian economy की बात करें, we are the fastest economy. 7.3% की growth है हमारी. Yes, there are challenges in economy. Yes, there are challenges in our real estate sector. So first of all, I'll start with this question. हमारी country की इकॉनमी कैसा कर रही है? बहुत अच्छा लगता है आपके साथ शरीक होने में और खुशी होती है कि आपकी चैनल बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आज ये मुलाकात हुई तो इसलिए जो हमारे देश की चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और इंडिविजुअल चैलेंजेस तो रहते ही है, हर एक के पास रहता है। छोटे लोगों के पास होते हैं, बड़े लोगों के पास बड़े चैलेंजेस होते हैं, और कोई नहीं है। चैलेंजेस तो रहते ही है, ऐसे तो करेंगे। हमारी इकॉनमी जो रफ्तार है 7.2, 7.4 बोलते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग जो रफ्तार देते हैं। लेकिन एक चीज़ में जो परिवर्तन आ गया है वो ये है कि हम पहले कोई भी प्रोजेक्ट सोचते थे ना, देश के लिए या हमारे खुद के लिए या कंपनीज़ के लिए, तो हम सोचते थे कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता था। और अभी ऐसी बात नहीं है। वो क्या हो रहा है कि कहाँ ना कहाँ जो प्रोजेक्ट वायबल है, जो अच्छे हैं, सरकार के प्रोजेक्ट्स देखिए, रोड हैं तो 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे गडकरी साहब रोज बनाते हैं, हर दिन में बनाते हैं। और उनको पूछिए तो बोलते हैं पैसे की कोई कमी नहीं। डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देखिए कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम 4 साल के अंदर एयरपोर्ट्स डबल कर रहे हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। एयरक्राफ्ट देखिए, 1500 एयरक्राफ्ट हमारे 3 एयरलाइन ऑर्डर किए,
वो विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या हुआ है. Right. That is the highest number of aircraft ordered from any country in the world is India today. तो देश पे प्रगति बहुत ही तेजी से चल रही है और चलेगी भी. तो ये है पॉजिटिव साइड ऑफ आवर इकोनॉमी. इसके ऊपर चल रहे हैं. चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस हैं कि सोच भी नहीं सकते, पूरे दिन निकल सकता है. राइट. लेकिन आज एक ही देखिए ना, ट्रम्प साहब की चैलेंजेस हैं. उनको ही पता नहीं है कि कल सुबह में वो क्या बोलेंगे और क्या करेंगे और कहाँ करेंगे. वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के घर अपने जेल में लेके आए. बोलते ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, हमको 100 नहीं 500% टैरिफ हमारे पर लगा देंगे. तो ये हेडविंड्स गिना जाते हैं जो हमारे देश के लिए हेडविंड्स है. इसकी जो आंसर है ना, वो एक ही आंसर ऑलरेडी हम कह चुके हैं, अभी हमें करना पड़ेगा. आंसर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत. लेकिन उनको पता नहीं था कि ट्रम्प साहब आएंगे, तभी उन्होंने किया. अभी वो उनको ये आत्मनिर्भर भारत बहुत ही तेजी रफ्तार से करना पड़ेगा. राइट. क्योंकि जो हम समझते थे कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेडिंग हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सब के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते. ये बहुत ही बड़ा हेडविंड्स है. राइट. ये फोन अमेरिकन है, दूसरे सैमसंग यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी अमेरिकन है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, तो सब प्रोडक्ट आप देखेंगे. हमारे प्लेन्स जो है वो बोइंग मैन्युफैक्चर की है. तो ये सब जो हम कर रहे हैं वो एक उनके भरोसे पर हम ये सब तेजी से रफ्तार की है. राइट. हमारी स्ट्रेंथ क्या है देखा जाए तो एज कंपेयर टू अमेरिका, हम सर्विसेज कंपनी हैं. राइट. हमारी आईटी की सर्विसेज हम देते हैं, जीसीसी के सर्विसेज देते हैं. ये सब सर्विसेज कंपनी में हमारा एक स्ट्रेंथ है, मजबूतियां हैं, एक ताकत है. लेकिन हम ये ताकत के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते. राइट. अभी हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे. इसलिए डिफेंस की इंडस्ट्रीज बन रही है, क्योंकि हमें अभी प्लेन्स बनाने हैं, हमें रॉकेट लॉन्चर बनाने हैं, हमें शिप्स बनाने हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, हमें फ्रिगेट्स बनाने हैं, हमारे वो विश्व में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने हैं. क्योंकि आज की तारीख में हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है. डिपेंडेंसी खत्म करनी है. डिपेंडेंसी पूरी खत्म करनी पड़ेगी. जो भरोसा हम करते थे, आज मैं समझता हूँ, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, मेरे हिसाब से हम धंधा करते हैं या रफ्तार से काम करते हैं, कल उठ के आपके साथ हमारा कुछ हो गया तो क्या करें. हमें ऑल्टरनेटिव्स देखना है. लेकिन हम ऑल्टरनेटिव रफ्तार पर जा रहे थे, लेकिन उनकी रफ्तार अभी 10 गुना फास्टर करनी पड़ेगी. क्योंकि हमें ये ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए विदाउट रिलाइंग ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें ये रफ्तार जारी रखना है. तो ओवरऑल विश्व में जो मल्टीपोलर एक्टिविटी चल रही थी उसको और ताकतवर बनाना है. तो हमारी रिलेशनशिप चीन के साथ हो, रूस के साथ हो, जापान के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, ये एक काउंटर बैलेंस हो जाएगा कि हम ये मल्टीपोलर एक्टिविटी हम ज़्यादा तेजी से जल्दी करें और आत्मनिर्भरता जिसके बारे में हमने ऐलान पहले किया था उसको अब फैंटास्टिक स्पीड से आगे लेके जाए. तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ग्रोथ, दिस इज द प्रॉब्लम, इज द सोल्यूशन. राइट. हर एक का सोल्यूशन है. इसके ऊपर हम सोचें तो आई थिंक दिस इज एट द नेशनल लेवल जो हमारे देश को करना पड़ेगा. Right. और कर रहे हैं. सो आपने अभी सेल्फ सस्टेन होना है इसकी बात की, आपने बात की कि हमारे पास पैसा है सबसे बड़ी चीज़. सो अर्लियर देयर वाज अ टैबू दैट इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, बट आई डोंट थिंक सो, आई हैवंट हर्ड अबाउट इट कि अब कोई ये बात बोलता है कि इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री. सो धीरे धीरे करके हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. 2047 तक हमें 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो शायद हमारी कंट्री भी एक डेवलप कंट्री में की लिस्ट में आ जाएगी. सो अगला मेरा क्वेश्चन यही आता है सर, हमारी इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है,
इसके रेफरेंस में क्या ये इकोनॉमी अच्छे करने के साथ साथ रियल एस्टेट भी अच्छा करेगी? रोटी कपड़ा मकान हमारी नीड्स तीनों है। बाकी आप एआई हो न हो, रोटी कपड़ा मकान तो होना ही रहेगा है। ही रहेगा, राइट। हम 5,000 साल पहले गुफा में लोग रहते थे, बाद में छोटे मकान बने, ग्राउंड फ्लोर मकान बने, मल्टी स्टोर मकान बने। मकान की ज़रूरत है, इसमें दो मत नहीं है। सो मकान की कमी कभी नहीं होगी। रियल इस्टेट विल ऑलवेज ग्रो। हमारी आमदनी बढ़ गई, रियल इस्टेट विल ग्रो, राइट। सो दैट इज अ सिंपल आंसर। अगले साल इकोनॉमी ग्रू एट 6.5%, 2024-25 की बात कर रहा हूँ। 6.4-6.3% हुए थे। रियल एस्टेट ग्रू एट 10%, राइट। दिस ईयर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 7.2-7.4%. रियल एस्टेट एज पर क्रिसिल स्टैंडर्ड एंड प्रो will grow at 12%. Right. My estimate, it will grow at 15%. Wow. This is my personal estimate, and this is what up till now, 15% growth from last year's figures. So real estate is definitely going to grow. उसमें कोई दो मत नहीं है, और लोगों के पास अभी पैसे हैं, नंबर 1. नंबर 2, जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, NBFCs है, कंपनी है. Do you know that the growth of housing finance companies last year in retail home loans was between 15 and 20% growth? Wow. The largest bank in India, हमारे सबसे बड़ी बैंक, State Bank of India, grew SBI. 15% last year Wow. in terms of retail home loans. So, real estate is anyway going to grow. Funding is definitely available for the purposes of growth. The question is, all the other components जो हैं, उसके हिसाब से हमें बनाना है. EMI capability of people to buy, income strengths which are there, availability of land at a reasonable price, infrastructure development, and all the other social elements जो साथ में आते हैं, वो एक challenges है. So, economy is growing, real estate has grown, will grow. It will, according to me, grow anything between 12 and 15% for sure this year. और उसमें तो वो हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं, वो संख्या, और दो फिगर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. मेनी ऑफ देम आर शोइंग 10%, कहाँ 12% दिखा रहे, पर मेरे अंदाज से जब टोटल संख्या आ जाएंगे कि आपका 15% आ जाएगा. Right. So, real estate growth story आपने शेयर करी, but still there is one of the biggest challenge, as real estate is the biggest asset of everyone's. आज अगर मैं पैसे कमाऊंगा, मेरा lifestyle upgradation में the biggest money will go in real estate. But when we talk about unemployment, जब पैसे ही नहीं होंगे तो real estate कैसे खरीदा जाएगा? I'm talking about a mass scale. So if we see from a bird eye view, India as a country, as unemployed people, then with reference to that, real estate, so how we will cater this challenge? Two aspects of the question that you asked. One is income levels. आप देखेंगे पहले जो गरीबी थी, मुझे परसेंटेज याद नहीं है, वो X थी, अब वो आधा हो गया लास्ट 10 साल के अंदर. मिडिल क्लास है वो 4x हो गया, और रिच क्लास है वो 5x हो गया. वो सबसे ज़्यादा बड़ा, वो सबसे ज़्यादा लोगों के पास पैसे आ गए हैं, और मिडिल क्लास भी काफ़ी बढ़ गया. ऐसे नहीं है कि ओनली द रिच क्लास हैज़ ग्रोन, द मिडिल क्लास हैज़ ऑल्सो ग्रोन. वो भी है. दीज आर फैक्चुअल रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल टू अस, बट आई डोंट नो द परसेंटेजेस. बिकॉज ऑफ दैट, definitely the growth of the industry and the demand in that is taking place. So that is the positive side. So what are the challenges? The challenges which is there is that the cost of land, the cost of development, the cost of taxation, all that has grown faster than the incomes. So यहाँ हमारे इनकम्स तो नक्की बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ कॉस्ट ऑफ लैंड और ज़्यादा तेजी से बढ़ गया. जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इन्फ्लेशन इन दैट एरिया इज ऑल्सो ग्रोन, एंड टैक्सेशन हैज ऑल्सो ग्रोन हेल ऑफ अ लॉट. तो ये आप कंबाइन करेंगे तो वी हैव क्रिएटेड द चैलेंज. इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द चैलेंज, वी हैव क्रिएटेड अ चैलेंज.
So the government, local authority, states have to work together with the private sector or the government sector or housing bodies and others. और इसका solution हमें निकालना है. हम डिफेंस का solution निकालते हैं, स्पेस का solution निकालते हैं, और प्रोजेक्ट्स के हम solutions निकाल रहे हैं. लोगों को, फार्मर्स को क्या करना चाहिए और क्या यूरिया देना चाहिए, उसकी जो हम सब्सिडी 1 ट्रिलियन रुपीस के अंदर हम गिन रहे हैं. लेकिन हमारे पास हाउसिंग सेक्टर में ये फोकस नहीं किया गया है जितना हमें करना है. हम नहीं बोलते कि नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन जितना हमें हमारे देश के लिए करना है उतना नहीं हुआ. वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. लेकिन हमने किया नहीं है. जो नहीं किया है वो अभी हमें करना है. करना है. रेडी रेकनर रेट, सर्कल रेट, जंतरी रेट, जो भी आप बोलते हैं, दे हैव केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर टू पिक अप मोर टैक्सेस. हम देखा जाए तो यू कैन नॉट बाय लेस देन द रेडी रेकनर रेट, नहीं तो इनकम टैक्स आपके पीछे अननेसेसरली लग जाएंगे. नंबर 2, देखा जाए तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, अदर टैक्सेस बाय लोकल, जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह जो लेते हैं वो इतना बढ़ गया है. जहाँ मुंबई शहर की बात कर सकता हूँ, जहाँ हम डेवलपमेंट करते हैं, हम 50,000 रुपया फुट में हम वो फ्लैट बेच रहे हैं. 26,000 रुपया टैक्स गवर्नमेंट के चार्जेस है. राइट. स्टैम्प ड्यूटी, रीडेवलपमेंट चार्जर, GST, लेबर सेस, अब जितना भी आप ये टोटल गिन गए. तो मुझे चैलेंज किया गया तो फाइनली कि भाई आप क्या बोल रहे हैं निरंजन, ये गलत मत बोलिए. तो मैंने आर्किटेक्ट एसोसिएशन से ये एक सर्टिफिकेट मंगा लिया और सरकार को भेज दी कि आउट ऑफ दैट 50,000, 26,000 इज गोइंग टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स तो उसके अलावा है. सो व्हाट हैपेंस इज वी हैव नॉट फोकस्ड इनफ टू टेक केयर दैट इट शुड बी अफोर्डेबल. हर एक ये समझता है कि ये सेक्टर ऐसे है जहाँ से सरकार कमाई ज़्यादा कर सकती है. नथिंग रॉन्ग विथ गवर्नमेंट टेकिंग टैक्सेस, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ. But you have to take taxes in a way by which the industry and the poorest of poor should not suffer. Right. वो रियल एस्टेट में नहीं हो रहा है. अभी देखिए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने GST कम कर दी. क्यों कम कर दी? क्या जरूरत थी? हर एक आइटम के ऊपर कम कर दी. बहुत से आइटम इंक्लूडिंग सीमेंट एंड स्टील के ऊपर कम कर दी. कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे मेजरली इफेक्ट. और पता है क्या हुआ? कंजम्पशन बढ़ गया, कलेक्शन बढ़ गए. रेट कम किया और कलेक्शन बढ़ गए. तो हमें मोर क्वांटिटी ऑफ रियल एस्टेट करना है तो आपको इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह कर दे. महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के समय पर इसको 50% कर दी थी. ओके. यस. और बहुत ही तेजी से अफोर्डेबल हाउसिंग की रफ्तार बढ़ गई. लेकिन कोविड पूरा हो गया तो बोले अभी कोविड नहीं है तो ये टैक्सेस वापस आना चाहिए, और आ गए. जो पहले था वो फिर आ गए. तो ये हिसाब से हमें सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को मिलके इसके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है. और जो क्रांति हम और सेक्टर्स में हम करना चाहते हैं वो क्रांति हमें हाउसिंग में करने की ज़रूरत है. राइट. सो वी नीड टू नॉट डू डेवलपमेंट इन रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, वी हैव टू डू हाउसिंग रेवोल्यूशन. एक इसमें क्रांति हम कर दें और उसको क्रांति का ऐलान कर दें तो ये हो जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल दूं. 22 साल पहले मैं एक कमेटी में था मुंबई शहर में. बाला साहेब ठाकरे ने वो कमेटी बनाई थी. मैंने पॉइंट लिखा हुआ है सर. और उसमें मैं उसका मेंबर था. Right. अफजलपुर के साहब हमारे चेयरमैन थे. Right. और हमने डिसाइड किया था कि 10 साल में हम मुंबई के सब झोपड़पट्टी का पूरा डेवलपमेंट कर देंगे. आज 22 साल हो गए, अब तक 4% ही डेवलपमेंट हमने किया है. 46% अभी भी झोपड़पट्टी में रहते हैं. 46% नहीं, MMRD की कैलकुलेशन है कि 51% आज भी रहते हैं, क्योंकि और आगे ना. हाँ, तो झोपड़पट्टी जितने लोग शिफ्ट हुए और लोग उससे ज़्यादा आगे. तो ये होने के कारण, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि हम 7 साल और 10 साल के अंदर मुंबई की पूरी झोपड़पट्टी कंप्लीट कर देंगे, पूरा रीडेवलपमेंट कर देंगे. वाओ.
So this will be a live example in front So of everyone. this is an example of problem जो आप पूछ रहे थे. And solution. चैलेंजेस क्या है? ये एक चैलेंजेस है. सोल्यूशन क्या है? सरकार को पता है सोल्यूशन. पहले तो क्या था, सिर्फ निरंजन हिरानंदानी को पता है या आपको पता है या इसको पता है. अभी ऐसी बात नहीं है. अब सबको पता. अभी सबको पता है इसका सोल्यूशन क्या है. सरकार ने टैक्सेस कम क्यों की थी ड्यूरिंग कोविड? क्योंकि उनको पता था कि ये प्रॉब्लम आप करेंगे तो रियल एस्टेट की सेंटिमेंट बिगड़ जाएंगे. Sentiment, no, not sentiment. Real growth took place, not sentiment alone. Real growth took place. So they know the answer. But क्या है, जब तक टॉप डाउन हमें ये नहीं, प्रधानमंत्री जी कह दे वी वांट हाउसिंग फॉर ऑल, वी वांट टू डू इट. देयर इज वन मोर पॉइंट फॉर द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, और वो है रेंटल हाउसिंग. अमीर से अमीर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ 50% लोग जन्म से मरण तक रेंटल मकान में रहते हैं. एंड अच्छे मकान में रहते हैं, खुशी This से is रहते हैं. provided by the company जहाँ वो काम करते हैं. जहाँ वो काम करते हैं, अथवा इंडिविजुअल पीपल, कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, पीपल, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इनटू हाउसिंग. बट फॉर दैट गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट पॉलिसीज, benefits for the sector. To create this housing we need to incentivize it. तो ये हमारा सुझाव ये बजट में भी है, वित्त मंत्री को हमने किया है, प्रधानमंत्री जी से किया है, हाउसिंग मिनिस्ट्री में भी किया है कि आप रेंटल हाउसिंग का ऐलान करिए और उनको बेनिफिट्स 5 साल के लिए दीजिए कि यू आर गोइंग टू मेक इट टैक्स फ्री फॉर 5 years. Right. So you will get thousands and thousands of houses. 2 साल पहले हमने इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिए ये बेनिफिट दी है. Industrial rental housing has been already given the benefit. Right. So that similar thing should be done across the industry. And the third challenge which is there, very big today, is affordable housing. जितनी भी ग्रोथ आपने देखी है और जो मैंने आपको कहा, देश का 7.2, रियल एस्टेट का 10%, आगे 12% होने वाली है. Can you believe it? Affordable housing volume has come down by 20% in the last 18 months. Right. Only luxury, luxury, luxury. So there is obviously a mismatch, and you need to not punish but incentivize कि आप affordable housing करें. हमने वाजपेयी जी के टाइम पर हमने ATIB किया था, जहाँ हमने टैक्स फ्री रखा था फॉर स्मॉलर हाउसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, और बहुत ही बड़ा काम हुआ था. देयर वाज सम अब्यूज एंड मिसयूज, सो गवर्नमेंट टेंडेड टू विथड्रॉ इट, तो क्योंकि छोटे घर का 2 कंबाइन करके मिसयूज किया था. लेकिन 10% मिसयूज हमारे देश में तो होता ही है. कोई खून करता है तो उसको सूली पर चढ़ाते हैं, फिर भी लोग खून तो करते हैं. सो सम मिसयूज इज बाउंड टू बी देयर, बट वी शुड स्टिल ब्रिंग इन affordable housing benefit like ATIB again. So if that is done, then we have a problem in real estate, we have a solution, and we know the solution and we can do it. Right, right. So government का बहुत बड़ा vital role play है इसमें. नहीं, दोनों का, प्राइवेट सेक्टर even private sector बड़े बड़े also. जो है कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है, डेवलपमेंट कर रहे हैं न्यू टाउनशिप. Reforms will come by the Reforms government. will come, but industry will also be enthused if you give them incentive. आप कैसे करते हैं? PLI करते हैं, दूसरे इंडस्ट्री के लिए आप बेनिफिट देते हैं, हाउसिंग के लिए भी दीजिए ना. यू डोंट वांट ओनली इंडस्ट्री. रोटी कपड़ा मकान, मकान के लिए भी इंसेंटिवाइज करिए ना. Right, व्हाट इज right. रॉन्ग विद दैट? So मेरा next question ही यही है सर. I personally feel that this is one of the biggest industry and इसको कहीं ना कहीं neglect कर दिया जाता है even in budget. अब इकोनॉमिक सर्वे होना है 28 Feb को, दोबारा वही डिस्कशन हो रही है. हम सारे चैनल्स पे वही सेम रिपीट देखेंगे कि शायद रेपो रेट कम हो सकता है, कुछ और GST में बदलाव आ सकता है. बट अगेन इट इज़ नॉट इनटू द लाइमलाइट कि रियल एस्टेट का एक्चुअल बेनिफिट क्या है. वो 1-2 लाइन वो बजट में रियल एस्टेट के लिए बोल दी जाए एंड देयर आर नो न्यू रिफॉर्म्स. सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ अबाउट दिस बजट, दिस अपकमिंग बजट? सो टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, बहुत कुछ किया है, नहीं तो ये तेजी से
हो नहीं सकता। 7.4% GDP ग्रोथ करना इस Highest in the world. इट्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। ऑल्सो द स्टेबलाइजेशन ऑफ डेफिसिट लिमिट जो किया है, उसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल आया है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एयरपोर्ट्स बन रहे, पोर्ट्स बन रहे। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। Right. लेकिन क्या हो जाता, whenever what the government has done is focus on so many items. What we now need is a focus on housing. So आपने नहीं किया, उसके लिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप अभी करिए। See, whenever there is something which is not there, it's an opportunity. Right. You look at it negatively. I don't look at it negatively. आपके पास Barrel एयर landed. क्वालिटी खराब है, तो उसको सुधार करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी है, करिए। Build the technology. Build the technology, build the work, take action and do it. So whenever there is something like this, I look at it as an opportunity. So we should focus on housing and create a housing revolution. एक क्रांति करने की आवश्यकता है। हाउसिंग रेवोल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए। रेंटल हाउसिंग हमें करने की आवश्यकता है। हम अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर ATIB जो पहले थी उसको लेके आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सब आप करके प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट करें कि इसको हम कैसे भी पूरा कर देंगे 5 साल के अंदर। तो मुंबई की तो देवेंद्र फडणवीस साहब झोपड़पट्टी देख लेंगे कि पर, लेकिन पूरे देश में हम समझते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, सिर्फ अफोर्डेबल नहीं, हर सेक्टर। देखिए अभी इस साल टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा है। टूरिज्म विल ग्रो दिस ईयर बियॉन्ड 15 to 20%. Wow. Why? Because the government is now focusing. And even domestic demand is there. Tourism, temple destination, J&K, Kerala backwaters. Maharashtra is doing so much work on it. New AeroCity in Mumbai region is coming up. तो हर एक चीज में आपको एक ही काम करना है. You identify the problem, look at what the solutions are, and take action. And what a satisfaction if you can give house to everybody, an affordable house to everybody, rental house to everybody. वो एक जो satisfaction रह जाएगा ना घर में, वो कोई भी चीज में नहीं मिल सकता जो इसमें आएगी. So अगला मेरा चैप्टर क्वेश्चन ओपन होता है सर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो कल रात की बड़ी अच्छी न्यूज़ क्लिप थी. सो आर सिविल एविएशन मिनिस्टर, ही जस्ट अनाउंस्ड that in another 2 years we will complete 50 airports. By 2047 we will be having 350 airports. Then multiple projects, Bharatmala project, Delhi Mumbai Industrial Corridor, metro rail, your high speed rail. We see all these infrastructure development happening in India. There is just one thing which I want to put point on. The first problem is that why we are so slow when it comes to implementing it, and second is why we compromise on quality also. So these are some of the challenges. Even infrastructure is doing very well. So I really want you to address these challenges. So the first point is easy to answer. There was a day and time when money was not available. हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे, इतने कलेक्शन नहीं होते थे, देश की उन्नति प्रगति नहीं थी. People were not wanting to invest in FDI, FII or anything like that. अभी उसकी कोई कमी नहीं है. आप अच्छे प्रोजेक्ट लाइए तो पैसे मिल जाते हैं. तो that is the one very big thing that has happened. The faith in the government of India in terms of projects also, whether road, railways, airports, ports and other things, बहुत ही ज़्यादा है. हमारे सेकेंड एयरपोर्ट अभी खुली है. हम मुंबई में थर्ड एयरपोर्ट का प्लानिंग शुरुआत कर दी है. थर्ड पोर्ट का 2 पोर्ट है मुंबई में एंड थर्ड पोर्ट का शुरुआत हो गया. नेशनल हाईवेज, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, ये वो सब हो रही. सो वी हैव नॉट टू वरी अबाउट व्हाट वी डिड नॉट डू. हमें ये सोचना है कि what is it that I can do in the next 5 years and how much more can I do than what I want to do. हमें एक हमारी उम्मीद से ही ज़्यादा करने की आवश्यकता है और हम कर पा रहे हैं. So the point is very simple. Like I gave the example of services industry in IT, and now we are going to make products in the next 5 years, and we have to do it if you want to counter this
Trump We issue. don't have any other option. We have no options. You must do it, and we can do it. It's only that we focused on services. We made so much money on services that we didn't bother to make capital. So infrastructure capital. Now let's talk about what you said. The second point, quality के ऊपर क्या है? हमारे पास 5 कॉन्ट्रैक्टर मैं जानता हूँ जो हिंदुस्तान में काम करते हैं और दुबई में भी काम करते हैं. ओके, उनके यहाँ के रोड्स पॉटहोल पॉटहोल पॉटहोल, और वही कॉन्ट्रैक्टर दुबई जाके The best road of the world. not one pothole in the whole city of Dubai. How much? Not even one. Not one pothole in whole city of Dubai. And I just went to Vietnam, the country which was bombed completely by the US. All roads, all areas, no road has got even a wave. पॉटहोल तो नहीं है, लेकिन वो वेवीनेस जो आती है ना कभी कभी रोड्स में, वो भी नहीं है. Which city? Ho Chi Minh City? No, I went to the Hanoi. Fuqua. Okay. Fuqua. Okay. Beautiful place. But so it is not that we cannot do it. एक हमारे पास एक चलता है करप्ट एटीट्यूड है. एक बार कॉन्ट्रैक्टर बेकार काम किया हो, उसको पहले सूली पर चलाना चाहिए. सेकेंड, उसको बैन करना चाहिए कि फ्यूचर में वो कोई भी कंपनी में हो, नया कंपनी भी खोले तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दें. एक बार आप ये कह दें, मैटर इज ओवर. थर्ड, दे हैव अ पोजीशन दैट L1 को देना है. क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर? L1 डालते हैं और फिर एडिशनल आइटम्स क्रिएट करते हैं. ये एक सब कॉन्ट्रैक्टर, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर. नहीं चोरी है. इट इज चीटिंग. आप कुछ भी, मेथडोलॉजी ऑफ चीटिंग में भी डिफरेंट, बट दे आर करप्ट एंड चीटिंग. तो ये we have to close this subject completely in the future. Right. Whether you make bad roads, bad buildings, bad anything, we should never tolerate now anymore. पहले हम गरीब थे कि हमको टॉलरेट करना पड़ता था. But do you want bad medicine? Suppose tomorrow I give you bad medicine, will you accept No. it? Bad food, No. unhygienic food. No. Why do you accept bad roads? Why do you accept bad anything? So ये एक बहुत ही महत्व की बात है. It has to be top down. It has to be bottom up. Right. हमें इंडिविजुअली घर में हमारे बच्चों को सिखाना है हाउ डू यू डू गुड क्वालिटी एंड हाउ यू मस्ट डू गुड वर्क Right. एंड हाउ यू मस्ट बी एथिकल. ये तीनों हमें घर में सिखाना की बहुत ही आवश्यकता है. यू कांट जस्ट मेक वेल्थ, यू बी एथिकल वेल्थ. ये बहुत ही महत्व की बात है. Because we are not able to teach them, and the person who's doing the contract, he's only looking at what is the bottom line of my project. कैसे मैं ज़्यादा पैसे बनाऊं, कैसे मैं अच्छा काम करूं, वो नहीं देखते. और ये बहुत महत्व की बात है. हमारे देश में परिवर्तन ये लाने की बहुत ही आवश्यकता है, और पूरे विश्व में ये हो रहा है. It's not only Dubai. You go to any country now in the world, the quality of goods, barring few African countries, all the rest of the world, the quality is so good. It is unbelievable. Even the countries who are not doing well. Who are not doing Still- well also, still their whatever infrastructure is new far things better. they are making good quality. Right. And we have to do it, and we must do it. Corruption and bad quality, दोनों को हम सूली पर जब तक नहीं चलाएंगे ना, हमारे देश की तरक्की नहीं होगी जहां हर एक को फायदा मिल जाए. Right. देखिए, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर स्टार्ट किया. UPI. हम बोलते थे कि ओनली 30% वॉज रीचिंग द पर्सन्स. हमने परिवर्तन कर दिया, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर. देयर इज नो चोरी. मे बी 1 or 2% चोरी हो रही है बाय पुटिंग रॉन्ग नेम्स, बट इट्स ओनली 1 or 2% एज कम्पेयर टू 60% इन दोज डेज. Right. तो हम जो भी करना चाहते हैं, एक बार हम डिसाइड करें कि करप्ट प्रैक्टिसेस वी विल स्टॉप, क्वालिटी वी विल इंसिस्ट ऑन. We have to mandate that. There should be a ministry of good quality. And they should Non-tolerance policy होनी चाहिए. Sorry? Non-tolerance policy होनी चाहिए कि कोई टॉलरेंस ही नहीं है. टॉलरेंस बहुत छोटी बात होती है. टॉलरेट क्या है? बच्चे कोई मिस्टेक किया तो उसको टॉलरेशन कहते हैं. ये नहीं है. सूली पर चढ़ाना है. See, we are unnecessarily treating it very mildly. Because I've made a building
which after 22 years you didn't require to paint it also. Right. Forget the quality of paint. The other building I'm now doing redevelopment, which is falling down. After 30 years, that building is now falling down. So it requires redevelopment. देश का कितना नुकसान हो रहा है. Right. And the persons have put hard-earned money into that place. And you It's accept our own money. and you accept that bad quality. How? Why? क्यों? और जरूरत नहीं है. So we have to mandate this quality which is required to be done, and those people who make bad quality, we must just stop it. Corruption and this, ये दोनों बंद कर दिए ना, तो हमारे देश की रफ्तार 10.2% हो जाएगी next year. Wow. And the asset value will shoot up like mad. And it is happening everywhere in the world. So there's nothing that, ऐसे कोई मैं आपको सीक्रेट बात नहीं कह रहा हूँ कि जो हमें कोई शिक्षण हार्वर्ड में जाके इसको कोई शिक्षण लेने पड़ेगी कि हम वहाँ जाके सीखेंगे कि ये अच्छा काम कैसे किया. क्योंकि हमारे लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं. And they know how to do it. No, you can't do it. So every single thing comes with a cost, sir. अब हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इतनी रोड बना रहे हैं, रेल नेटवर्क बना रहे हैं, thousands of trees we are cutting. AQI, it is not a new thing. Aravali की अभी बात हुई, Aravali was in the news. So who will be responsible for all of this thing? Infrastructure बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, AQI, all these 7 metro cities, now it's like वो खाली दिल्ली नहीं है, पूरा नॉर्थ इंडिया हो गया है. Earlier, there used to be one single Delhi NCR name. You go anywhere. You go to Punjab, Haryana, still the AQI is worst. So who will be responsible for this? I am responsible. We are responsible. The moment you accept something, that's your responsibility. How can you... We have to work together to do it. It's not only Prime Minister's responsibility. It is not Delhi government. It's not Punjab government. It is not there. We have to be responsible for doing this work. Everyone should say, what can I do to help it? Prime Minister will do at his level, the minister, Delhi government will do at their level. But we need to sit together and say, next year, this has to be changed. उसमें हमें 2000 करोड़ चाहिए, ये 50,000 करोड़ चाहिए. We have to do it and we have to do it. So if a common man has to ask a question, what I can do to change the AQI of my city? There is nobody who cannot do something. It is our belief that small things make it. आप segregation of waste करें ना, if the waste is also put in a proper way, that little thing of segregation of waste and then waste disposal of all things. Recycling of water. If today we recycle all the water which is there in Delhi, there will be no shortage of water ever. Right. And you don't need to pollute the cities. So, water is also badly polluted because of the whole thing not taking place. Industries, industrial waste. Which is there. What is the problem of farmers? I was president of ASSOCHAM. We had prepared a note paper. How the machines can be given and created because of the short time over there. We need about 10,000 crores worth of machines in order to shred all the farm things within the 3 weeks that is needed to be done. 10,000 crores. Massive numbers. But 10,000 crores is nothing. If air quality of the entire region, City, farmers area can be totally solved, not a single farmer will be able to do. 10,000 crores is nothing. We should invest in this equipment and then do it and give it over there. You give it on hire or whatever it is, charges will be recovered or not covered. But 10,000 crores worth of equipment we need to do. We have to compulsorily lift all that material, thresh it and take it out so that the farmer issue which is there gets sorted out. EVs that we really need to do, non-polluting issues, whatever need to do, segregation of waste, segregation of water and improvement to do. You create a ministry which does only this, central government, state government and everyone. A person of the grade of senior secretary of the government, a senior minister of the government of India, senior minister in all the states, combined create a war room. जैसे हम पाकिस्तान के साथ जंग करते हैं ना, तो ये 3 एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों साथ मिलके एक वन हो जाता है. हमें एक साथ में बैठ के करना है कि we make a ministry which only does this job. नीति आयोग
का एक भाग अंग एक सेपरेटली ये कर दो कि सिर्फ यही काम करे, और फॉर विच मे बी एन एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी और पर्सन बिकम्स द चेयरमैन ऑफ दैट, अ मिनिस्टर ऑफ सीनियर मिनिस्टर इज गिवन अ जॉब ऑफ दैट पार्ट और फुल टाइम, तो यही काम करे, एंड ही हैज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड कम अप विद सोल्यूशन. देयर विल बी 50 solutions. I'm saying we'll do it in 2 years. Maybe it'll be done in 4 years. But it can be done. There's nothing that we cannot do. So I don't think that any problem cannot be solved now. I hope any government official is watching this podcast. No. The problem is not that. The problem is there may be alternative solution. This is my solution. The question is anybody can think of other solutions, but I'm just saying the solution is, the problem is so serious that along with Ministry of Defense, we need to defend our air. Right. We defend our own population. One of the आप आर्मी रखते हैं क्यों? देश को डिफेंड करने के लिए. This is also to defend. So this should be also a Ministry of Defense from air pollution defense. Right. More people will be killed just because of this AQI, not war. More people are being killed every day because of the air pollution than war in India. Absolutely. Right. So the question is, as we say, we identify a problem, we look for solution. We have enough people who can give solutions. We have the political leadership to do so. The only thing is we have to move from intent to action. The intent to action has not moved. And this is an opportunity. दिखाओ पूरे देश को, विश्व को कि हमने कैसे किया. हम रॉकेट भेजते हैं मून को, साउथ पोर्शन ऑफ द मून, एंड वी से एट 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ नासा वी हैव सेंट अ रॉकेट टू द साउथ पोल ऑफ द मून व्हिच नोबडी हैड डन. Right. ये भी पूरे विश्व को दिखाओ कि हाउ वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग. In fact, the biggest prize in the world will happen to our governments, both at the center, state, and all that. If they solve the problem, can you imagine how people will be happy? The whole country will come. हम महात्मा गांधी बन गए थे हमारे देश को इंडिपेंडेंट करने को. From if you can save yourself from this pollution, the person will be bigger than Mahatma Gandhi. Right. क्योंकि वो 75-80 years पहले थे. अभी के महात्मा गांधी बन जाओ ना. Right. So बहुत अच्छी बात बोली सर आपने. इंडियन सिटीज़ में जैसे हम देखते हैं दोबारा, चाहे वो मुंबई हो, we focusly work in Gurgaon, we see even cities are teared off. The road infrastructure, I'll give you a very good example of Gurgaon. Gurgaon is the biggest contributor of GDP in Haryana. Still, we have best of the best developments. Private developers has done exceptionally well. But in monsoon, आपके मुंबई तक भी channels में सिर्फ यही news आती होगी that we have big potholes, water logging problem is there, car डूब गई, कुछ और हो गया. And yes, it is a mess. I understand we can't build Gurgaon from scratch, but how to rectify these problems where we have an established city, but infrastructure is crippled? Yeah. So what really happens is the biggest mistake in our planning standards in this country has been in the last 75 years. Okay, we have never planned our cities at all for the growth process that we have done, and we have believed that infrastructure is not important. अब तक ये इससे सोच विचार थे और हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं हुई. Neither on to planning, not on the infrastructure, not on the issue of this problem, the execution. So all these three things had not happened. So now what happens? You have to only retrofit. So we have to identify 10 problems, 5 problems, 6 problems. So we have, let's say, Mumbai city is 200 years old. So there are many low-lying areas. We get waterlogging in those areas. Right. But they are low-lying areas and the sea is higher. The whole city has grown up. So those are low-lying areas. We have pumping stations, huge pumping stations. They just pump out and throw water into the sea. Okay. And those areas which I know from childhood used to get flooded, do not get flooded now. We don't even think कि ये जगह सायन वो सब 3-4 जगह हैं जो पॉपुलर, महालक्ष्मी है, सायन है, ये है, वो है.
In the last 4 years, we've never found flooding there. Okay, this is interesting. But we have done that pumping and everything. So we identified the problem. We technically saw it. What was the solution to it? So we have provided new drains and we have provided very large size pumps which just pump out of the water in 10 minutes. So as it rains, the water is pulled out. We identified this 15 years ago. Then we started investing into it. We are doing it. Now, for instance, recycling of water. We don't put proper treatment of water in the sea. Now, corporation is working to do it. But they're now not using recycled water for industrial or other use, which Nagpur is doing, for instance. So we have to now persuade our corporation that please get that water to use at least for your maidans, at least for your other places which can be done. Recycled water and treated water can be done. So each item as a problem does have solution. In some cases it's retrofit because जैसे जूने सिटीज बन गए उस समय ये सोच विचार नहीं था कि इतना ग्रोथ होगा, इतनी गाड़ियां होगी, इतनी बारिश होगी और इतने वो रोड जो अब बनाए हैं वो होंगे, दूसरे रोड्स ऊपर आ गए, मकाने आ गए. सो इन ईच केस इट्स एन एक्सपेंसिव सॉल्यूशन व्हेन यू retrofit. If you have planned in advance, there is there. So the new cities that are coming up have to plan in advance to see that how to do that so the problem will not happen after 20 years. Like Noida, Chandigarh. Wherever. So isn't it challenging for real estate developer to cope up with bad infrastructure of any city? The answer is in the question. The answer is yes, of course. See, when I went to Singapore 25 years ago, they were opening new townships. When they made the townships, they made the roads, they made the gardens, they made the school, they made the police station, they made the fire brigade. And then they started development. Okay. We do the reverse. We do all the buildings and then they bring the roads and then we bring the hospitals and then we bring the police station and then we bring the fire brigade. So every city development which is required to be done has to be planned in advance. That's all. It's a simple thought. There is nothing big. We are now building Mumbai 3.0. Mr. Devendra Fadnavis is doing it. Now let's presume if our city development is just starting. So if he doesn't build the infrastructure first, then the same problem which will be there in Mumbai 3.0. And if he builds the infrastructure and does it first, then it will be a beautiful thing. My project is now 37 years old in Powai. People still come and say, बहुत बेहतरीन project है. Why? Because the construction quality is superb. Because the planning, the norms, the water, the quality, the infrastructure, the facilities and everything was made good 35 years ago. Right. And people are still saying, बहुत अच्छा है. मुझे तो ताजुब हो रहा है कि how come people still like something and say it is good which I made 35 years ago. You know, I made now also, but I'm just saying that people still like that. Why? Because we planned it, we designed it, we executed it, and we made good quality. That's all. Shouldn't everybody be doing that? Yes. That's as simple as that. So we actually need to follow that pattern for cities. The question to answer is that please do that for new cities, areas also. Even it will be good for developers also. It'll be good, not forget developers, it'll be good for the people. Everyone. Developers तो आके चले जाएंगे, they are as good as contractors. Developers को बहुत बड़ा महत्व मत दीजिए. People are important. They are the ones who are going to live there forever. Developers पैसे कमा के चले जाएंगे, नुकसान करके चले जाएंगे, कमा के चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स बना के चले जाएंगे. लेकिन जो रहते हैं उनके लिए तो जो सुविधाएं हैं उनको ऐसे बनाना चाहिए कि लोग 100 साल के बाद भी बोले वाओ. Right. So I was watching one of your podcasts where you mentioned about Ayodhya. So हमारे जितने भी all the old infrastructure they are here from thousands of years. So ऐसा नहीं है कि हम अच्छा बना नहीं सकते. ऐसा नहीं है कि we don't have that brain. We have one of the finest brain in the world. So we can do it, but वो intent की problem है. So developers से एक step और आगे बढ़ते हैं sir. When we see all these cities, in last almost around 4.5 years, we have seen real estate market has done exceptionally well. But there was a single name which was common in every single metro city, that was luxury housing.
So luxury हर जगह सुनने को मिला, and what we have seen, just because of big houses in name of just aspirational living, only last 4 years majority of the houses which were sold, it were category हर city की अलग हो जाती है, it were above 1 crore, 1.5 crore. Now it's like we don't get a 2 BHK in Gurgaon under 1.5 crore rupees also. So don't you think that now in these 7 metro cities, affordability is the biggest issue? Even the market is doing superb. You are 100% right. My pune and driver also needs a house. Why are you only talking about the top rich all the time? ये सब लोग उसके ऊपर इतना गौर करते हैं क्योंकि पैसा वहाँ है, कमाई वहाँ है, इसलिए सारे बात वहीं करते हैं. नहीं, this is not correct. खाना गरीब को मिलता है ना, कपड़ा भी मिलता है ना, मिडिल क्लास को भी मिलता है, अमीर को भी मिलता है. वो क्रिश्चियन डियोर का लेगा, वो बीच वाला रेमंड लेगा, दूसरा पर्सन भी लेगा, वो भी कमीज पहनता है, धोती पहनता है, कपड़े पहनता है, पैंट पहनते हैं, घड़ी लेते हैं, सब कुछ करते हैं. The problem of each segment is separate. We want the rich class, we want the middle class, we want the affordable class, we want the peon and driver also to get a house. These are different segments and it has nothing to do with India. अमेरिका में भी ये है, रूस में भी ये प्रॉब्लम है, लंदन में भी ये प्रॉब्लम है, दुबई में भी ये प्रॉब्लम है, एंड वी लुक एट डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंटली. प्रेसिडेंट स्टेज एट राष्ट्रपति भवन. व्हाई? ही शुड स्टे इन अ कुटिया. Not like that. Every segment of society worldwide has always had that type of thing. Wherever there is a deficiency, you focus on that. Don't look at कि अंबानी साहब का मकान जो बना था, $1 billion home, and look at that. Why worry about it? Let him make $5 billion house. It doesn't matter. We want to see that every segment of society should be taken care of. Rental housing, affordable housing, land prices, segmented. हमारे पास मुंबई में आज के तारीख में 1000 acres salt pan land free है, जहां हम कोई मकान नहीं बांध सकते थे. अभी केंद्र सरकार ने वो परमिशन दे दी. Okay. We will be able to make enough affordable housing on those lands Okay. in order to take care of the whole population of Mumbai city. Wow. This is real solution. Solution. So when you say that हमारे पास ये प्रॉब्लम है, you give me a problem, we sit on it and we'll find a solution. If I can go to the moon and if I can double the number of airports and we can buy all the best planes in the world and we can make all the national highways, I promise you these problems are no problem. It is a matter of intent, focus and that. But if you concentrate only on the rich homes as we are talking today, then our focus will go there only. Everyone is focusing on that. नहीं, हमें focus करनी है, उसके ऊपर focus भी करिए ना. You see, the point is, in every podcast I go to, they spend too much time on that. Spend time on saying what is it that we can solve the problem. Like you said, इसका solution क्या है? Infrastructure solution क्या है? Same way, we have solutions for affordable housing, rental housing, industrial housing, services housing. So all those problems can be solved. It is only the question of action on the intent. But what about the prices, sir? So, in example, 2170 lakh rupees. The land of salt pan land is free. It is sterile. You can now make it unlimited price. You make the best buildings over there. Make international level GCC buildings over there. And each acre of land will be worth 50 crores per acre. Or you can make affordable houses in half of it, and half of it you sell at 50 crores per acre. So you make GCC, you make industrial, you make commercial, you make schools, you make hospitals, you make all this, and you make affordable housing where you say land cost is free. So automatically you sell people at 2,500 rupees a square foot. Or you create rental housing where all the poorest of poor will be able to pay rent. Right. So even one question again comes in my mind. So affordable housing, हमारे यहाँ पे there is a policy, Haryana's policy, affordable housing, where 25 to 30 lakh rupees you can get a 2 BHK if you apply
in any of the affordable. But if I'm earning good, I have a package of assumingly 25 lakh rupees, I will never live in that affordable house. A 3 BHK house which was 70 to 75 lakh rupees in 2021, today it is 1 crore 80 lakh. Yes, it is good for investors. Yes, it is good for people who are just putting their money in real estate. But as a common man, आज मैंने वो 70 लाख का आज 2 करोड़ भी बजट कर लिया, बढ़ाते बढ़ाते डिले करते करते. टुडे ऑल्सो आई विल नॉट गेट अ 3 BHK, decent 3 BHK under 2 crore rupees in Gurgaon. So this problem, how we can address, I want to live in Gurgaon, I don't want to go in outer suburb, how we can address this challenge? Every line has its own challenges, including every industry. I'll give you a small example. In 1971, we changed the policy on cars. We used to manufacture 10,000 Ambassadors and 10,000 Fiats. That was the manufacturing capacity of India. No other company was there. No other company was there. Right. So we were two. There was a waiting list of 7 years in order to get a car. We used to use influence. We were not open economy. We used to do influence to get in 3 years. Telephones. We were not able to get telephones also in those days. Now what happened? We created a policy which made change. Today, BMW and Mercedes sell 1 lakh some plus cars every year. Both of these companies. You focus on that. अरे 10,000 के 1 लाख बेच रहे हैं. But do you know how many Marutis are produced? 1.4 million. Wow. I'll repeat. 1.4 million Marutis. Times. Only one company. So what have you done? Have you said stop manufacturing BMWs? No. Mercedes? No. Mercedes चल रहा है, चलने दो. Innova चल रहा है, चलने दो. Maruti है. Manufacturing ज़्यादा बढ़ा दो, demand है. Yeah. Sit in a Maruti car. The quality of Maruti car is excellent. Right. You can make affordable, good quality houses. You can make rich houses. You can make middle class houses. And you can make bungalows and villas also all over the country. But you have to understand that you have to create surpluses in every segment. What do you do about food? Lal Bahadur Shastri in 60s found a solution when we used to go with a begging bowl to America and Canada to get wheat. Right. Right. हमने क्या किया? हमने अपना उगाना शुरू कर दिया. ग्रीन रेवोल्यूशन. 4 साल के अंदर सब सॉल्यूशन कर दिए. And today we are not deficit of food since that time. We export also. Right. You can do the same thing for housing. It's a matter of 5 years thinking. You've done it for cars. You have done it for airports. You have done it for aeroplanes. You're doing it for railways. You're doing it for ports. You think we can't do it for housing? Of course we can. Do it. The question is, focus on it. Intent, action, delivery. Khatam. So solution oriented mind रहेगा तो बिल्कुल हो सकता है. 100%. Right. और हो रहा है, लेकिन we have not focused on it to get the ultimate solution. See, today what has happened, that production has increased. But since production has not increased so big, the top end is first benefited. If you had increased the production so much to create surpluses in housing, देखिए क्या करते हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा, डिलीवरी भी इम्प्रूव होगा और सबको मिल जाएगा. राइट. सो इससे आगे एक और क्वेश्चन आता है सर. वी हैव 7 मेट्रो सिटीज, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता. सो आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि चाइना में कितनी मेगा सिटीज है. चाइना हैज 18 मेगा सिटीज. सो व्हाई डोंट वी कंस्ट्रक्ट मोर मेट्रो सिटीज to take care of this affordability wala point? Because in these epicenters, houses will be very, very high in cost because land cost is there, then construction cost is also high. So हम ऐसी और metro cities क्यों नहीं बनाते? Answer is in the question. Why do people come and live in jhopatpattis in Mumbai when they have homes in their villages? Because it is Mumbai. No, because they have jobs. Jobs. See, the problem is if you don't create economic activity in the cities, in the metro, in the other cities, you won't be able to do it.
So if you create 50 places which have got economic activities, there will be no problem. It will get decentralized. But the point is that economic activity cannot only be generated by the government. They can create epic centers and attract places and do secondary levels. But it is an economic driver which really creates cities. So you cannot create another Gurgaon easily. But UP government is created Noida and that area. Why? How? Because they focused on that idea and created it. So, but it's a tremendous effort. It's not easy to do it. UP government has taken 30 years in order to create the Noida effect. So they made that bridge, which they call it what? Noida, some bridge was first made. D&D. I don't know which is that bridge. I Delhi don't know the Noida. name. Delhi D&D. Noida, jo bridge tha. I know ILFS did the funding. UP government didn't have the money to do it. So they used private sector funding to create that bridge. And then they had a toll in order to do it. That's how the toll came on that bridge. Even Noida is New Okhla Industrial Development Authority. Yes. So that's it is a part of that Okhla industrial Okhla area. India. So the whole purpose is that you have to do that, and it takes a lot of effort in order to achieve that particular thing. So you mentioned about, sir, 50% of people lives in Mumbai right now also. In another 7 years, this slum will be redeveloped. So I want to understand, will it facelift the Mumbai? Of course. और कौन-कौन से areas होंगे जो और अच्छे निकल के आएंगे? You know, any place where development takes place is bound to go up. So if Dharavi is being done by Mr. Adani, Gautam Bhai, and those areas will definitely come up. Wherever we go, we do development. It attracts better people over there. We are in Powai, that has developed. We went to Thane, it got developed. We went to Panvel, near the airport, it's developed. We're going to Alibag, it is developed. So development can be done by government, local authority. It can be done by private sector. Reliance, as mentioned, is creating a new city in North India. Devendra Fadnavis is creating Mumbai 3.0. So all developments, whether created by local authority or now temple destinations which are being created. So all these different areas are going to come up over a period of years. Now, whether it is tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, it doesn't matter. Some could be even hospitality destination. So that's what the Prime Minister talked about. They're going to have 100 hospitality destination areas in the country. Tourism could propagate karne ke liye. So this is the way in which you create and decentralize and create new sectors of idea where jobs and other things will grow. So, but let me give you one or two more problems than what you, just to give you an idea of what other problems have been created because of development. Take the case of construction industry. Do you know that we are 2 million skilled construction workers short today? Okay. एक तरफ unemployment है और यहाँ we don't have. Shortage है. A company called L&T, the CEO mentioned it a couple of months ago, that company which has 17 skilling centers in India, they are 25,000 construction skilled workers short today. My goodness. In 2030, India will be 5 million construction workers short. So even in a line which is doing very well, where the jobs are available, people who become graduates are unemployed. But I cannot get plumber, fitter, carpenter, Electrician. painter, electrician, wireman, nahi milte. And they get 3 times the salary on day one. In 3 months, 4 months, 5 months of training, these people, they get 3 times the salary. This is 150 rupees per day, 4 times the salary, 600 rupees a day to a person who's a professional, any of this activity. So what has happened is that when you have growth, there are correlated benefits but challenges. So we have to address those challenges simultaneously with growth. You can't create national highways and not. Second, India, the largest employment, second after agriculture, is construction and real estate. Right. Housing. Now, if you don't skill the workers, you will get prosperity, but you will not get employment because they are not skilled.
So this Again, is- there will be a slowdown. Again, there's no, and you can create a problem. Look at Nepal. Nepal revolution did not take place because there was corruption. That was only a upar ka dikhav hai. No country goes for revolution for corruption. Because the people who were educated there are not getting jobs. So when you make your country rich, but you don't skill your workers for the employment which is available in your country, that's You're creating a problem. So many times when you're developing, there's a problem being created. I may have engineers, I may have technocrats, I may have BComs, BScs, this, that. And I run 14 colleges. So I know how many. I have 45,000 students in my colleges alone. But I also know that this segment is not being taken care of. Right. So we need to do all those aspects of it. So many times development also and prosperity also creates a problem. The young people, he goes and becomes a graduate. He's not getting a job. That's the challenge. So we need to take care of all these aspects of it, and skilling in construction and real estate is a very big problem. Government is doing it, but I think it's too little. One more problem, sir, I really want you to address on. So when we talk about real estate development, usually it takes 4-5 years, any good big construction. So in last 1 decade, we have seen many delays. 2016 RERA reform came, many things are streamlined. But अभी भी मेरे को एक problem दिखती है, challenging situation दिखती है, that is when a developer who is bankrupt, who declares insolvency, after the procedure of insolvency, that project going to any other developer take years. And ultimately the buyer suffers a lot. So this is also one of the biggest challenge of real estate. If a company is not able to do that development, that shift to another developer who can complete that development is very slow. So how we can rectify this challenge? So 90% of these problems are relating to projects which were pre-RERA days. Right. So those are separate. Unitech, JP, companies like... All that. So you can't combine those which were yesterday, and that is why RERA came into the picture. If you look at the number of complaints for new projects as compared to the old projects, it's very little. So if there were 1,000 apartments, you will still get complaints for about 50 or 60 apartments out of 1,000. Earlier days, jitna projects the, if it was 1,000, 700, 600 were a problem, especially in the northern region that we have. That's why RERA was brought. Right. So we have tried to mitigate that problem in terms of seeing for the new projects which are there, the escrow mechanism, the non-diversion of funds, the detailed verifications and all that. This is being done for the forward-looking project. We have not yet been able to give solutions for the older projects. Some of them is with the Supreme Court of India. Some of them have been there to new committees which have been appointed. Some of them are effective. Some are not effective. So we have a problem there. But that is why RERA came. So you won't find as many problems in the future as compared to the past. So a regulator has come into force. So like you have SEBI in the capital markets, we have RERA in the real estate market. And I think that mitigation is going to become more effective over a period of years. So that's been one solution on that. The second part which you talked about is to create effective mechanisms for default. Right. So we have had one solution which we created, and I was part of that creativity, is Swami Funds, where we intervene, take a project from start to finish, but we need 10 funds of Swami size. We have only one fund of 25,000. It's not enough. And government has only given permission for one. We need at least 10 funds of the size of Swami, and many other banks and financial on the last in first out, LIFO as you call it, which is the policy under Swami Fund. If that is done, then a large number of projects which are in difficulty through funding in that route. Because what does that do? The funding is such that they complete it without any other
additional expectation of money. Right. That's how Swami Fund operates. Now, once you do that for any other projects which is languishing, we will get solutions for all the projects. But they're not enough projects, enough funds permitted by the Government of India, Finance Ministry or the Housing Ministry, and they must do that. So I think if they do that, that will solve your problem. Right, sir. So next question is, yes, technology, AI, data centers, India being epicenter of all of this. Yeah. So now it's like we discussed about Atmanirbhar Bharat. So how all these angles, all these points, AI, data centers and real estate, eventually it will help each other. So I really want, what are the challenges and what are the solutions we can see in nearby future? Because we are at very nascent stage. So let's talk about data centers. My son has developed Yotta, one of the largest data centers in the country with the largest number of NVIDIA chips in India. Okay. So let's understand the quantum of data. India produces more data today than the United States and China put together. Wow. Today. And we store only 25-30% of the data in India. So requirement is huge. 5G is coming. AI is coming. So the requirement of data center is going to grow exponentially, multifold, beyond imagination. So data center is the future that is definitely going to happen. There is no question about it. As far as AI is concerned, AI, if you don't use AI, it is like saying I will not use my mobile phone. AI everybody will use. Some will use less, some will use more, some will use effectively, some will not use it, some will even abuse AI. Today you put false things, create images through AI, false images and all that stuff. So you can do anything through AI. So AI is going to be one of the most useful instruments in construction, in production, in productivity, in marketing, in sales, in data collection, data, whatever it is. So AI is imperative, as imperative as your mobile phone on internet today. All these aspects of it will always have a negative. It's like a knife. You use a knife for cutting vegetables. It can cut your finger also. No, you can kill somebody. Yes. So any instrument like AI or anything can be abused. So if it is abused, it is abused. So we have to be careful that it's not abused. That's all. But people will abuse it because knives are abused. Guns are abused. So what can you do? Right. And no matter what law you bring, some abuse will be there. And it continues to happen with knives, with guns, with whatever you want to do, with internet, with whatever it is you're having wrong thing. I don't think we need to worry about the misuse of it. What we need to do is how can we effectively use it in order to get more effective solutions for our country. And the moment you do that, all that will be on the side. बुरे लोग तो होते ही हैं ना. हम महात्मा गांधी नहीं है कि हर एक को हम सुधारने के लिए कोशिश भी करें. तो बुरे हैं वो बुरे लेने दो. अच्छे लोगों को साथ में शरीक ले लो और ये कारवां को बढ़ा दो, आत्मनिर्भर भारत कर दो, प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा रखो और आगे चलते जाएंगे. तो ये फैंटास्टिक देश है, फैंटास्टिक फ्यूचर है. रियल एस्टेट के लिए भी है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे देश के लिए. और हमारे पास ये ताकत है, लीडरशिप है, लेकिन ताकत हमारे पास भी है कि ये हम कर पाएंगे. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फ्यूचर. वी हैव द यंगेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. सो सर, मैंने प्रॉब्लम यूज़ नहीं किया वर्ड, सो मैंने चैलेंज ही इसलिए यूज़ किया कि चैलेंजेस होंगे उसके सॉल्यूशन होंगे. सो आई विल टेक अ सिटी नेम. You have to tell a challenge in that city and you have to give a quick solution also. So, Mumbai. We'll start with Mumbai. Eliminate slums. Okay. Delhi. Delhi is a city, not NCR. Growth. Okay. Bengaluru. Traffic. Pune. Industrial. Okay. Gurgaon, my favorite. Gurgaon. Gurgaon, I think solve infrastructure problem.
Right, right. Kolkata, Industrialization, Ahmedabad, Prime Minister Modi. no development after Prime Minister Modi or slow development? No, great development. His Okay. GIFT City and other things are there. His leadership in as chief minister and then subsequent also has been tremendous. Right. Goa, टूरिज्म डेस्टिनेशन और दिल्ली के कितने लोग वहाँ रहते हैं आजकल Delhi, everyone who is उनके doing पास well in घर their है। life, they have second home in Goa. सेकेंड होम इन को So we have a different kind of rapid fire round. हम rapid fire पे भी आएंगे. So this or that. So I heard a secret that you are searching for a good land in Gurgaon. So we will start with it. If you get an opportunity for your upcoming project, Gurgaon or Noida? very difficult I will choose one in both Okay. Still, if you have to choose one. Gurgaon Okay. Okay. Great to hear it. For vacation, Goa or Kerala? Goa Okay. Building biggest commercial mall or building biggest iconic 5-star hotel? hotel Okay. Which area still has juice, Thane or Panvel? Panvel Okay. Favorite tier 2 city, Jaipur or Chandigarh? Jaipur Okay. Buying a plot in Ayodhya or Varanasi? Ayodhya Okay. So now let's come on real rapid fire round. So your favorite city for vacation in India? Kashmir Okay. The property which you love except the one you have built? DLF Camellias? Camellia. Oh, great. Who is your inspiration, sir? Oh, too many. Every field of activity, I have 5. So whether it's political, it's Narendra Modi, Nitin Gadkari, so many of them which are there. In real estate, so many of them. DLF, Rajiv Singh, Embassy. I have many mentors in each line. Wow. Great to hear it, sir. Can any city replace Mumbai as richest city in future? If yes, which? I think- 2047, if we look 25 years ahead. Very difficult to judge because too many cities are actually competing. But I think somewhere in UP, with the growth which is taking place, some place can come up, including Noida. Wow. Interesting. Will you come up with a new project in North India? If yes, which city? Now it's not Gurgaon, Noida, it's more North India. I think between these two cities, yes. Gurgaon or Noida? Yeah. Right. What is the one thing you're scared of? Making compromises. Wow, this is nice one. If Homegram Gaurav Sopti wants to become a good developer, what one advice would you give? Think of how you would like the place you make if you were the customer of the place that you're making. Wow, thank you so much for this advice, sir. Last 2 questions. Which project you will invite me to come and feel the real Hiranandani style? The next one The next one, is Hiranandani Sands just now, which is 250 acres in Alibag, which has 5 hotels. Okay. It has a convention center. It has the best water sports in India. It has a forest with 27 acres. It has a wetland park of 100 acres and Wow. a private jetty. Wow. It has been launched? Just launched. Okay. Okay. I'd love to visit, sir. In Reality Drive 2.0, who is your favorite contestant? There's no contestant. Niranjan Hiranandani is my contestant. Whatever I made yesterday, I'm a contestant of that. So I want to make better than what I made last time. Right, right. So last one advice for government for budget 2026. रोटी कपड़ा तो हमारा देश ने पहुंचा दिया है. अभी मकान कमा के लिया. ऊपर आप जोर Focus कर. दीजिए तो पूरे देश आपको कभी भूलेंगे नहीं. 100 साल तक लोग आपको याद रखेंगे कि ये आपने किया. राइट. मैं चाहता हूँ ये
हमारे प्रधानमंत्री जी ये वाली क्लिप देखे. Thank you so much, sir. Thank It was you. really nice session. I hope you have enjoyed the podcast. Please let us know in the comment box आप किसको चाहते हैं होमग्राम के नेक्स्ट पॉडकास्ट में. And if you like this podcast, do share it with your family and friends. Thank you.